लास्ट टाइम हम लोग कहाँ थे? वी वर ऑन द वेबसाइट ना. तो गूगल डॉक्स कर रहे थे. यस, Yes, sir. we were doing Google Docs. So it was on EC Council, I guess, huh? Yes, sir. EC Council. Okay. So the website was security trials. Google. Yes, so Google Docs पे हमने last time we have seen lots of things in the Google Docs that we can use it for specifying the file path or the URLs or many of the other things. But over here, what are we gonna do? We're gonna check something like Google Doc with examples over here. So Google, let's find some log files. What are log files? Log files are, in the layman language, log file contains some login information according to the website and the client and the server applications. तो log files में अगर मैं सबसे ज़्यादा यहाँ पे बात करूँ, log files are the perfect example of how sensitive information can be found within the website. Sensitive information that could not be leaked by the client. और सबसे ज़्यादा important है कि यहाँ से हम data को कैसे fetch कर सकते हैं. Error logs, access logs are the types of application logs are often discovered inside the public HTTP space of the website. This can be help attackers find PHP version and running as this critical system path. तो अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ all in title इन्होंने यूज किया all in text और यहाँ पे all in text क्या करता है? Okay, so यहाँ पे अगर मैं बात करूँ all in text, search for the specific text contained on the web page. एंड मैंने यूज किया था फाइल टाइप जो कि आपका एक्सटेंशन दे रखा है, जैसे यहाँ पे लॉग दे रखा है, लॉग फाइल्स. This will show you a lot of result that includes user names and inside in a log file. तो लॉग फाइल्स के थ्रू हम कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं हमारे सर्वर साइड से. जैसे कि मैं अगर यहाँ पे देखूँ, we can see there are around 1,31,000 files which is sharing sensitive database in the social media. So let's try this one. And these are some log files which is server side. यहाँ पे देखो temp.log files जो कि आप अगर यहाँ पे पूरा पाथ दे रखा है आपका एक सर्वर का पाथ, यूजर शेयर अगेन ऐप डेटा लोकल टेम्प डेटा फाइल. दिस इज अ प्रॉपर फाइल पाथ ऑफ द सर्वर साइड. और अगर आप यहाँ पे और भी अलग देखो थोड़े से, you will see lots of other informations. These are some sensitive information which can be leaked from the server side. You can see some email address and the new passwords. But what are these things? You can visit the server. Some log files are the some log files are the data which should not be accessible by the client side because there is an impact. It can cause a lot of things, a damage over there. तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लॉग फाइल्स के थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, in this result we will discuss some particular website showing an SQL error log files. Some you will get some SQL error log files, some you will get some temp data log files. बट मैं यहाँ पे देखूँ तो ये सारी की सारी temp data log files है. और ये वाला कुछ, हाँ, ये function.txt फाइल है. तो मैं यहाँ पे अगर मैं ये जो फाइल यूज कर रहा था, जैसे कि फॉर एग्जांपल लॉग फाइल्स की, यहाँ पे SQL.log फाइल्स मिलेंगे मुझे, क्योंकि SQL.log फाइल्स के लिए आपको पूरा पाथ पता होना चाहिए. एक सिंपल जो यहाँ पे जो गूगल डॉक्स यूज हो रहे हैं वो आपके फिल्ट्रेशन के लिए यूज हो रहे हैं, जो कि बहुत सारे डेटाज आपके सोशल मीडिया में लीक है and we are not aware about those things. Our attacker can simply extract and leak all the databases over there one by one to check the possibilities. Google Docs के थ्रू अगर आप यहाँ पे सर्च करो, जैसे ये दे रखा है आपका exploit DB वेबसाइट. This is one of the used on various techniques जो कि मैंने आपको कल बताया था. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि उसमें एक्चुअली कौन कौन से गूगल डॉक्स में कौन कौन से सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मिले. जैसे कि यहाँ पे दे रखा है फाइल कंटेनिंग सम यूजर नेम्स. ओके, लेट्स सी ओपन दिस वन. अब इन्होंने क्या दे रखा है, गूगल डॉक इंडेक्स ऑफ username.txt file contains some sensitive information which is from Abhishek Raghav.
index of usernames, index of old specs, username.txt file. You will see all the files over here one by one. गूगल डॉक्स के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बहुत सारी चीजें, जैसे कि वल्नरेबल सर्वर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. Google Doc is used in various techniques. If you search for the data, if any of the vulnerable server, you can try all these things. And Google Docs आपके बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है, जिसमें आपकी हैकिंग के लिए सबसे ज़्यादा यूज होता है और इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए. यहाँ पे आप देख सकते हो vulnerable web server. This following docs can be used to detect vulnerable or hacked server that allows appending. Appending is get an access on the processor self CWD directly through the URL of the website in URL proc.cd file. जैसे इसने बता रखा था index page of WP content, जो कि WordPress website, and these are all hacked. There are lots of techniques that we can use it for information gathering part. देखो जब भी आप गूगल डॉक यूज करोगे तो सबसे पहले क्या होगा कि ये आपके जो क्रोम ब्राउजर है वो डिटेक्ट करेगा आपको. Hmm. 4351. These are some. This could be hacked files. MariaDB. Oh man. Google Docs can be used in various techniques. As if I talk about the information gathering, lots of people try lots of other further things. Same just like your Google Docs, an attacker simply used to identify the technologies again. So there is a website called your Built With. आपको Google Docs समझ आया नितिन? यस सर. कोई प्रॉब्लम मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा आपको? सर कल का एक डाउट था. हाँ जी बोलिए. सर हम किसी भी वेबसाइट को पिंग कर सकते हैं? हाँ किसी भी वेबसाइट को पिंग कर सकते हैं. ये लीगल तो नहीं है सर फिर? ये तो लीगल है, कोई कोई वो थोड़ी है. पिंग कर सकते हो, किसी को भी पिंग कर सकते हो. ओके सर. आईपी एड्रेस को भी पिंग कर सकते हैं सर? हाँ जी. ओके सर. हाँ जी. चलो एक और वेबसाइट भी आते हैं बिल्ड विद टेक्नोलॉजीज पे. बिल्ड विद टेक्नोलॉजीज पे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से सर्विसेज चल रहे हैं यहाँ पे. सो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको आइडेंटिफाई करना है कि बिल्ड विद में एप्लीकेशंस पे. सो बिल्ड विद टेक्नोलॉजी लुकअप. सो यहाँ पे जो मैं वेबसाइट डालूंगा मैं अपनी ecouncil.org की वेबसाइट डालूंगा. सो बिल्ड विद क्या करेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन निकाल देगा, जैसे कि हमारे व्हाट वेब करता था. क्लाउडफेयर हो गया, कौन कौन से इसमें टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, जैसे गूगल ऑप्टिमाइज 360 हो गया आपका, क्रेजी एग हो गया, गूगल एनालिस्टिक हो गया आपका, गूगल एनालिस्टिक क्लासिक. ये सारी की सारी एप्लीकेशंस है जो आपकी गूगल ईसी काउंसिल यूज कर रहा है अपनी वेबसाइट को मेंटेन करने के लिए. और हर एक अलग एप्लीकेशन पे अलग अलग चीजें डिपेंड करती है. वर्डप्रेस प्लगइन्स हो गए आपकी, ले साइडर रेस्पॉन्सिव हो गया, गूगल फ्रंट एपीआई, यहाँ पे बहुत सारी चीजें वन बाय वन. तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है आपको एग्जामिन करना है कि एक वेबसाइट में कौन सी एप्लीकेशंस रन हो रही है. उसके बाद आप उसको एक्टिव रिकग्निशंस में यूज कर सकते हो फॉर इंफॉर्मेशन गेटिंग पार्ट. जैसे कि अगर आप यहाँ पे डिटेल्स टेक्नोलॉजी पे जाओ, प्रॉपर कब वो इंस्टॉल हुआ था और कब डिटेक्ट हुआ था, हाउ मच इट कॉस्ट देम. ये देखो सारे इतने एप्लीकेशंस ईसी काउंसिल यूज कर रहा है जबकि हमें पता ही नहीं है. सबसे बड़ी चीज क्या है कि एक वेबसाइट जो वल्नरेबल होती है वो एप्लीकेशन के थ्रू वल्नरेबल होती है, जिसके थ्रू हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं कि एक सर्विस की बैनर ग्रैबिंग, जो मैंने आपको बताया था कि सर्विस प्लस वर्जन को आइडेंटिफाई करना कि वो अपडेटेड है या आउटडेटेड है.
तो तभी एक अटैकर उस पर अटैक करने की कोशिश करके उस पर अनऑथराइज एक्सेस देता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो मेटा डेटा के लिए आपको यहाँ पे लॉग इन करना पड़ेगा, जिसमें आप ये आपके इंटरनेट कनेक्टेड सारे वर्टिकल इन्फॉर्मेशन बता देगा। अगर मैं यहाँ पे लॉग इन करता हूँ, चलो लॉग इन करने के लिए मैं यहाँ पे एक वेबसाइट यूज करूंगा टेम्पमेल, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू यूज माई रियल वेबसाइट, रियल ईमेल एड्रेस। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा टेम्पेल, टेम्परेरी मेल सर्विसेज। लेट्स कॉपी दिस वन, let's paste it over here, and I okay, sign up for free कर लेते हैं, कोई बात नहीं। So now we are in. So मुझे थोड़ी पता था कि उसका प्रेसिडेंट कौन है, जय बवाशी। This is the president of the EC Council. Some telephone phone numbers from Toll, New Mexico, mine are getting it. Albuquerque address has been given over there. Vertical information, sitemap.urls. They have given all the possibilities one by one. Relations profiles, interconnected applications there. Yes, send a verification code. Let's have a look over here. Continue, verified. Interconnected applications. Type of IDs which is interconnected. अगर आप यहाँ पे ओपन करके देख सकते हो, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं यहाँ पे। ecouncil.org, galaxy.co.in and cisco.ecouncil, which is their domains. See, यहाँ पे डोमेन्स की बात हो रही है, यहाँ पे अलग अलग डोमेन्स देख रहे हो, जो कि इंटरकनेक्टेड हैं, लास्ट उनके साथ मर्ज किया था उन्होंने। So our major objective would be to check one by one all the possibilities. So built-with is also one of the best tools for using for information gathering, and there are lots of further applications that can be used one by one. जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो, Google Docs सबसे ज़्यादा यूज होते हैं आपके। Temp mail. Did you heard about the temp mail over here? For some of the applications, we are not able to use our permanent address, so we can use some temporary email address to receive or log in. Most of the hackers, they do this. There are further techniques that we can follow one by one to receive. For example, जैसे कि मान लो कि बहुत सारे hackers क्या करते हैं, they need to find the email address of the organizations, email address, person names, person details. So how is it possible to get the informations? Yes, there is a possibility that we can use it for information gathering part with the help with a tool which is can be used over here, that is the harvester. The harvester is a tool that can be used for information gathering part in a very simple. So over here, the main objective of the harvester is to enumerate the email address from the specific domain. जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो, -D stands for domain search for.
-b is for the source data कि कहाँ से डेटा को fetch करना है. -g is to use the Google Docs. -s for start the result. -v for verify, save the format, perform DNS reverse, count. और यहाँ पे अगर आप एग्जांपल देखो तो यहाँ पे एग्जांपल दे रखी है कि कैसे डेटा को फाइंड कर सकते हैं. और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अलग अलग सर्च इंजन से अलग अलग डेटा आउटपुट परफॉर्म होता है. जैसे आपका बाइडू हो गया, पिंग हो गया, पिंग बिंग एपीआई हो गया, सेंसिस हो गया, सर्ट एसएस हो गया, डॉग पेल हो गया. तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा, आई एम गोना यूज द फर्स्ट वन विच इज माय गूगल. व्हाई? बिकॉज वी नीड टू एनुमेट द ईमेल एड्रेस फ्रॉम द गूगल वेबसाइट. सो -d जो हमारा डोमेन था, डोमेन हमारा कौन सा यहाँ पे ecouncil.org. तो मैं यहाँ पे सिर्फ डोमेन नेम लेने वाला, यूआरएल नहीं. -l जो यहाँ पे यूज हुआ है वो आपका लेंथ ऑफ लिमिट ऑफ स्कैन होता है. लिमिट ऑफ स्कैन मतलब कि कितना डेप्थ ऑफ स्कैनिंग ये परफॉर्म करेगा टू फाइंड द एंट्रीज. तो मैंने यहाँ पे डिफॉल्टली 100 था, मैंने यहाँ पे 500 दे दिया था. अब -b कि कौन से सोर्स डेटा सोर्स से ये डेटा फेच करेगा. तो यहाँ पे बाइडू है, बिंग एपीआई है, सेंसिस है, सर्ट एसएच है, गूगल एपीआई है. तो मैंने यहाँ पे जो यूज किया, मैंने यहाँ पे गूगल यूज किया फर्स्ट ऑफ ऑल. लेट्स ट्राई कि यहाँ पे गूगल से क्या कितनी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं. अलग अलग वेबसाइट्स में अलग अलग आउटपुट आपके यहाँ पे शो होंगे जो आप इसे यूज कर सकते हो फॉर फर्दर टेक्निक्स. Searching from 100 result, 200 result, you can check one by one all the possibilities. See, I can see there are some email address just like your tech support, your webmaster, your cert manager, your first EC council. और ये जो ईमेल एड्रेस देख रहे हो, ये इसने यहाँ से गूगल से ही फेच किया है. अगर आप यहाँ पे अबाउट अस में जाओगे, so you will see lots of other websites. So our major concern, if I use some different search engines, जो कि मैं यहाँ पे गूगल यूज कर रहा था, मैं यहाँ पे लिंक्डइन यूज करता हूँ. चलो देखते हैं कि लिंक्डइन से क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकता है हमें. So let's copy LinkedIn. See, LinkedIn से मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकला. These are the person email address. Christopher Mendres, which is your CISO state. Stephen Gibler, senior director, Ankura. Jason Trickney, Robert Manson, Desi Gracia. See, Raviraj Rao, information security analyst. Jadev Reddy, senior team lead, EC Council. These are all the persons which are integrated, or you can say have a proper access of the permissions of the EC Council website. Through the harvester, you can gather information because each and every domain has a different thing. You can use it for virus total, you can use it for any other further things, one by one. So सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि हर एक आउटपुट में आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी जो कि आप यूज़ कर सकते हो वेरी डिफरेंट टेक्निक्स. जैसे कि आपका नेटक्राफ्ट हो गया, हंटर हो गया, दीज आर सब सर्च इंजन्स. फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं ये जो हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं गूगल के सर्च इंजन को यूज़ करते हैं, बट मैं यहाँ पे जो सर्च इंजन यूज़ करूँगा वो होगा मेरा बिंग डॉट. अब जैसे यहाँ पे bing.com में मैं यहाँ पे IP// यूज़ करने वाला हूँ. और मैं आईपी किसका यूज़ करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे IP EC काउंसिल का यूज़ करूँगा क्योंकि हमें EC काउंसिल की सब डोमेन्स को फाइंड आउट करना है. bing.com से भी आप सब डोमेन फाइंड आउट कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको जो यूज़ करना है वो आपका IP एड्रेस यूज़ होगा, जो कि IP एड्रेस क्या है आपका.
यहाँ पे जो मैं आईपी एड्रेस डालूंगा बिंग के थ्रू आईपी डॉट 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 फॉरवर्ड स्लैश, यहाँ से क्या होगा कि जितने भी यहाँ पे इस आईपी सर्वर में जितने भी आपके एप्लीकेशन हैं वो सारे के सारे रन कर रहे हैं। ये देखो 3,27,000 websites has been running on this. You can open any one. See, इसकी आईपी एड्रेस और इसकी आईपी एड्रेस सेम है, यानी कि एक सेम सर्वर में रन कर रहे हैं। transpolo.com इस स्पेसिफिक आईपी एड्रेस पे आपके कुछ 3,27,000 डोमेन्स रजिस्टर्ड हैं। देख रहे हो आप ये दिन। सो एक अटैकर इजीली डेटा को फेच कर सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। Is it clear, Yatin? Hello?